So our today's lecture is specifically on generation of AM. As of now, we have seen what an AM signal is, need for modulation. लेकिन अब हम कोशिश करेंगे इस AM signal को generate करने की. ये भी सोचना है ना, हम AM signal को generate. So heading is generation of AM. हमने लास्ट क्लास में ये देखा कि फिजिकल वर्ल्ड में AM सिग्नल दिखेगा कैसे, ठीक है? So broadly classifying, there are two methods for generation of AM. I'll go very quick, you also write very fast. First one is Square's law modulation method or modulator. The first thing which I use to generate an AM signal is known by the name of Square law modulator, and the second one is known as switching modulator. Go on now. First one is important. First thing first, a simple block diagram to represent this Square law modulator would look like something like this. I have my summation positive. I have my carrier C of T. This goes to a box or a black box which operates as a Square law device. The output of the Square law device, say this is VI, this happens to be the output. This output goes to a band pass filter, and the final signal that is generated over here is S of AM of T is what we need. This is a local oscillator. This generates the carrier C of T. Eyes on board, please. So it means any device or any system, eyes on board, means silence and focus. 1 second, then you can talk for again. Therefore, it means I can replace this black box with any device which operates as a Square law device. Now, what do you mean by a Square law device? That it squares your input. You should not ask to come in. Whenever you come, you just come in. You already waste time by being late. You just leave 10 more seconds by asking and then 10 more seconds by entering. So, unnecessary. You keep your eyes down and move fast. If you have already wronged yourself somewhere. Anyways. So anything which operates as a Square law device. Now Square law device means जो हमें squared outputs देगा and all that. Now a diode, इसमें आप लिखिए. हाँ? Right. Okay. This is a Square law device. This is a band pass filter. Remember this? The last block of a modulator. Eyes on board, please. The last block of a modulator will always be a band pass filter. Because यहाँ से जो Square law device है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे हाथ में नहीं है. ये एक बैंड ऑफ सिग्नल जनरेट करेगा. उस सिग्नल में से खाली हमें वही सिग्नल्स जनरेट लेने हैं which will represent our AM signal. या एक AM सिग्नल में क्या होता है? एक कैरियर पार्ट और दो साइड बैंड्स. ये Square law डिवाइस इस तरह से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स जनरेट करेगा. उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन हमें वही वाले कंपोनेंट्स पिक करने हैं जो हमारे AM सिग्नल के अंदर होते हैं. देखो हम कहेंगे रिजल्टेंट सिग्नल को लाने में इस बैंड पास फिल्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है जी. पहले हम एक Square law डिवाइस को देखते हैं ये क्या है, उसके बाद बैंड पास फिल्टर को भी देखेंगे because this is the first time we are seeing these two things, so it deserves some time.
A scalar device has the characteristics as this. एक scalar device की characteristics, if I mark this as the output voltage and I say this is the input voltage, up till this region, that is this one, this follows square law. What do we mean by that? इस region में your output V out can be given as, say, constant A1 into Vi plus constant A2 into Vi square plus constant A3 into Vi cube. So it just goes on increasing, square, cube and so on. But as you move beyond this point, this is a linear graph. This phase is linear. So इसका मतलब square law device has to be a non-linear device. Point number 2. Square law device has to be a non-linear device. And we understand non-linearity by using squares and cubes. For a linear device, we know linear resistor. Do you know what's a linear resistor? Where V is equal to I into R. R is the constant, or R is equal to V by I. They will always be constant. So हम क्या कहते हैं, लीनियर रेजिस्टर का ग्राफ इस तरह से होता है. Do you remember? ऐसे. So this phase or this low voltage phase represents the non-linear phase and follows square law, which is nothing but this. Therefore, this expression gives us the change in V out with respect to Vi. The expression gives us the change in V out with respect to Vi. What is V out? This voltage. What is Vi? This voltage with respect to this. Okay. हम क्या कर रहे हैं? हमारा काम क्या है आज? हमारा काम है असली AM सिग्नल को जनरेट करना. ठीक है? हमने कहा AM सिग्नल को जनरेट करने के लिए हमारे पास एक नॉन लीनियर डिवाइस होना चाहिए और एक बैंड पास फिल्टर होना चाहिए. अगर वो होंगे, हम उन दोनों को इस तरह से सेट रखेंगे and we'll get the AM signal at the output. Now what we are trying to understand what a non-linear device is or what it can be. So just to state you that a diode can act as a non-linear device or a device which follows square law in this region. ये जो ये वाला ग्राफ है, अगर आपने डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े होंगे, पढ़ा है ना? डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नहीं याद है? ऐसे ही थे. Initially graph close था to the zero axis and then it used to be linear. ऐसे ही है ना? फिर कुछ चेंज नहीं होती थी. So इस low voltage region में ये non-linear relation follow करता है. That means starting में तो हल्का सा linear ही होता है, लेकिन as we move on, as we increase the value of Vi or as we define the whole this graph, so we will have non-linear relation between Vi. This will continue, by the way. We will have non-linear relation between Vi and V out. That is what we mean by saying non-linear. A linear relation would have meant V is equal to IR. R is fixed. मतलब ना एक linear graph रिजल्ट है. लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे जब Vi का वैल्यू बहुत हाई हो जाता है, तब जाके ग्राफ linear है. इसका मतलब एक तो 2 पॉइंट्स आ गए. पहला पॉइंट ये कि पहला पॉइंट क्या बोला मैंने? पॉइंट नंबर 2 जिसको मैंने बोला था, नेचर ऑफ स्केलर लॉ डिवाइस या एक डायोड का नेचर जो है वो नॉन लीनियर होता है. ये तो पॉइंट नंबर 2 है. देन थर्ड पॉइंट इज in a certain voltage range, yes, again, for a diode, it operates as scalar device. For a diode, it operates as scalar device. Scalar, जो ना आप देख रहे हो scalar, only in low input range. Only in low input range, where value of input voltage
where value of input voltage is less than the cut in voltage. Eyes on board. ये वाली voltage है cut in voltage, we represent that by V gamma. Yeah, what do you call it? Where the input voltage Vi is less than the cut in voltage of diode. क्योंकि we know जब आपका डायोड का cut in voltage attain हो जाता है उसके बाद it also behaves linearly. ठीक है? So आपके डायोड के कट इन वोल्टेज से पहले आपका डायोड जो है वो बिहेव करता है नॉन लीनियरली. हाँ, सो एएम मॉड्यूलेशन के लिए हमें इस वोल्टेज की जो डायोड की जो बायसिंग करनी है वो कट इन वोल्टेज से कम करनी है. आई रिपीट, आपको ग्राफ से पता चल रहा है कि एक डायोड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इस तरह से है. Once you see the characteristics like this, you realize that below the cut-in voltage, my diode operates as a non-linear device. After the cut-in voltage, it operates as a linear device. Therefore, in order to use a diode instead of this square law device, or I would say in order to use the diode as a square law device, I have to ensure that it is operated under low voltage conditions, such that the voltage is less than the so कट इन वोल्टेज तभी जाके नॉन लीनियर रीजन में ऑपरेट करेगा. वरना अगर मैं डायोड की इनपुट वोल्टेज को बढ़ा दूं तो ये लीनियर रीजन में ऑपरेट करेगा. देयरफॉर व्हिच इज ऑफ नो यूज, व्हिच इज एज गुड एज अ रेजिस्टर. इससे मुझे कोई फ्रीक्वेंसी में असर वसर नहीं पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए. यहां पे इसको लिख लीजिए स्क्वायर लॉ रीजन और इसको लिखिए लीनियर रीजन. और हमें डायोड को ऑपरेट कराना है इस रीजन में. अब अगर हम इस इक्वेशन की बात करें, यहाँ पे जो आपका Vi है वो किसके बराबर है? ग्राफ आइज ऑन बोर्ड प्लीज. Vi का बराबर है, Vi से बराबर m of t प्लस c of t सिंपली. या हम कहें इट इज इक्वल टू m of t प्लस कैरियर का वैल्यू कितना है? ac cos of 2 pi fct, because m of t can be either single tone or multi-tone depending upon the nature of metal signal. फिर हम उसको m of t रखते हैं. अच्छा, इस पॉइंट को इंश्योर करने में कि आपका डायोड जो है वो किस रीजन में रहे? नॉन लीनियर रीजन में. ये देखिए, मैसेज सिग्नल विल हैव वेरी लो स्ट्रेंथ. मैसेज सिग्नल विल हैव वेरी लो स्ट्रेंथ. क्यों? क्योंकि ताकि ये वोल्टेज जो है इसको क्रॉस कट वोल्टेज को क्रॉस करते रहे. मैसेज सिग्नल विल हैव वेरी लो स्ट्रेंथ in the order of millivolts oblique microvolts. मैसेज सिग्नल की जो वोल्टेज होगी ये आपको मिलीवोल्ट्स में होगी या माइक्रोवोल्ट्स में होगी. Point number 2, the carrier signal should also be generated with very much low strength. The carrier signal should also be generated with very much low strength. The carrier should also be generated with very much low strength, such that the peak voltage of Vi, such that the peak voltage of Vi, what is Vi? Sum of these two, such that the peak voltage of Vi should be less than cut in voltage of the diode. Should be less than the cut in voltage of the diode. Common, so that the diode exhibits square law characteristics. So that या such that डायोड जो आपका है वो एग्जिबिट क्या करेगा? आपका स्क्वायर लॉ कैरेक्टरिस्टिक्स. ब्लॉक नंबर 1 हमने डिफाइन कर लिया. इस क्वेश्चन का आंसर लिखने में भी आप यही थोड़ा सा अप्रोच देंगे. जो भी आपने ब्लॉक डायग्राम बनाया उसके ईच
ब्लॉक को या तो उसकी फंक्शन बतानी है और या तो उसका ऑपरेशन बताना है, ठीक है ना। व्हेन यू कंस्ट्रक्ट ए आंसर यू शुड ऑलवेज ट्राई टू ऐड डायग्राम्स एंड डिस्क्रिप्शन किसी भी सब्जेक्ट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, बैंड पास फिल्टर। बैंड पास फिल्टर के ऑपरेशन को समझने के लिए आप एज्यूम करें हमारा m of t कुछ इस तरह का है। Our m of t looks like something like this. ये आपका 0 point है। This is omega, this is minus omega. Whereas this is your m of f. What is m of f? m of f क्या है? Spectrum. Spectrum. Frequency, amplitude, spectrum. उसमें हम एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट करते हैं, ठीक है। मैंने कहा आपका m of t का स्पेक्ट्रम इट लुक्स लाइक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इज दैट ओके? और आपका जो ऑब्वियसली फिर आपका जो s of am of t होगा कंसीडरिंग अबव सिग्नलाइज में मैसेज सिग्नल योर सेम पॉइंट बाय द वे एंड आपके पास एक कैरियर जो होगा सो दिस विल बी fc plus omega, this will be fc minus omega, this will be fc minus fc plus omega minus fc minus omega। क्या सही? अब हम देखेंगे एक बैंड पास फिल्टर का रिस्पॉन्स कैसा होता है। देखिए क्यों जी, हाँ? ताकि ये सिग्नल, ये मेरे एम सिग्नल का स्पेक्ट्रम है, ये मेरे एम सिग्नल का स्पेक्ट्रम है। मेरे बैंड पास सिग्नल का रिस्पॉन्स या फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स डिसाइड होता है उस सिग्नल के स्पेक्ट्रम से जो उसको पास कर रहा हूं। आई रिपीट, मेरे बैंड मेरे बैंड पास सिग्नल का रिस्पॉन्स जो है वो डिसाइड होता है मेरे सिग्नल के, सुनो, मेरे बैंड पास फिल्टर का जो रिस्पॉन्स होता है वो डिसाइड होता है उस सिग्नल के स्पेक्ट्रम से जो उसको पास करना होता है। समझ आया? Therefore, my signal to be passed is this. The spectrum of the signal which is to be passed is this, right? And I can see that the points which have some amplitude range from fc plus omega to fc minus omega, right? Therefore मेरे फिल्टर को जो रेस्पॉन्स होना चाहिए वो इस रेंज के लिए 1 होना चाहिए एंड बाकी रेंज के लिए 0 होना चाहिए। लाइकवाइज नेगेटिव रेंज में भी इस थोड़े से रेंज के लिए 1 होना चाहिए एंड बाकी 0 होना चाहिए। व्हाट डज दिस मीन? व्हेन आई मल्टीप्लाई दीज टू, ये सिग्नल एज इट इज, this signal multiplied by 1 will result in what? It will result in the same signal again, and any other signal over here will result, when multiplied with 0 will result in 0. So मेरे आउटपुट में आएगा कुछ इस तरह का सिग्नल फिर से। यहाँ पे हमें इसका मकसद नहीं समझ आ रहा है, लेकिन आप इमेजिन कीजिए वो सिनेरियो जहाँ पे बहुत सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे। आपको समझ आए? So वहाँ पे हम नहीं समझ आया, वहां पे हम देखिए ये जो बैंड पास फिल्टर है, एक फिल्टर है, ये फिल्टर है। फिल्टर समझ नहीं आता आपको क्या होता है? अच्छा नहीं। सो आई ओनली वांट अ सर्टेन बैंड टू बी पास, तो मैं फिल्टर का रिस्पांस वहां पे 1 कर देता। आई वांट ऑल अदर बैंड्स टू बी ब्लॉक्ड व्हिच हियर आर 0 फॉर नाउ, बट व्हेन यू जनरेट एन एएम सिग्नल इट विल हैव मेनी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स। मे बी उसमें से कोई एक यहाँ पे भी होगा, कोई यहाँ पे भी होगा,
लेकिन मैंने अपने फिल्टर का रेस्पॉन्स क्या सेट कर दिया, बिटवीन, यहाँ पे लिख लीजिए FC माइनस ओमेगा एंड FC प्लस ओमेगा, और यहाँ से भी माइनस FC माइनस ओमेगा एंड माइनस FC प्लस ओमेगा। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे यही दो स्पेक्ट्रम्स आएंगे, बाकी वाले ये वाले जो भी बीच में दाएं बाएं कहीं वो ब्लॉक हो जाएंगे। फिल्टर का मकसद यही होता है, और स्पेशली व्हेन यू टॉक ऑफ अ बैंड पास फिल्टर, उसका काम ये होता है टू pass a certain band of frequencies while as reject all other bands. When you talk of a low pass filter, the job of a low pass filter is what? The job of a low pass filter is low pass filter, low frequency. It allows low frequencies to pass and blocks the higher frequencies. Likewise, Jana, the job of a high pass filter is क्यों है? I need it loud. Low pass filter. Frequencies. While as to allow the high frequency, that is called as high pass frequency. Now, when we talk about a band pass frequency filter, it allows a certain band which can be either high or low, but it will be a band and blocks all other frequencies. You get my point? So this ये important है, इसमें ये वाली फिगर जो है, this is the response of a band pass filter centered about FC, having the frequency in FC plus omega and FC minus omega. यहाँ इसका गेन होगा 1, ठीक है? 1 means allow and 0 means not allow. ओके, असली काम अब है, ठीक है? हो गया क्या? क्या क्या जरा आप बताइए क्या? हाँ, ये रिस्पॉन्स यहाँ मतलब दिखाने का मतलब ये है कि हमने इस स्पेक्ट्रम को मल्टीप्लाई किया बैंड पास फिल्टर के रेस्पॉन्स से, और यही वापस फिर से आएगा एज इट इज विदाउट एनी चेंज, राइट? व्हाई? बिकॉज इस रीजन में गेन 1 है और इस रीजन में गेन 0 है, तो जहां 1 गेन है वो एज इट इज आएगा। दिखाने का मकसद यही था, जहां 1 है वो 1 एज इट इज, वो स्पेक्ट्रम वैसे ही आएगा एज इट इज, ठीक है? ओके, डन हो गए? शैल आई रेज दिस? Settle down, that's okay. So now we have assumed the value of V of I to be this. In previous case हमने निकाला, हम उसको पुट करेंगे, higher order terms को नेग्लेक्ट करेंगे, हम V square तक ही ले रहे हैं. So then this turns out to be m square of P plus AC square cos square 2 pi FCT plus 2 times क्या हुआ? Is this the expression that will come out? Right. अब देखिए, अब आपको समझ आएगा बैंड पास फिल्टर का ऑपरेशन। देखिए जरा, बैंड पास फिल्टर will only provide 2 terms at the output. The band pass filter will provide only 2 terms at the output. हमने क्या रखा बैंड पास फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स? वी सेंटर्ड अबाउट FC, राइट? इससे प्रीवियस डायग्राम जो आपने बनाई, बैंड पास फिल्टर रिस्पॉन्स इज सेंटर्ड अबाउट, व्हाट डू आई मीन बाय सेंटर्ड अबाउट FC? उसमें था FC प्लस ओमेगा, FC माइनस ओमेगा, बीच वाला पॉइंट क्या था? FC। जिस तरह ना AM सिग्नल में था, बीच वाला पॉइंट FC, ऊपर वाला FC प्लस ओमेगा। डायग्राम में बनाइए, बीच वाला पॉइंट उसका FC है। बाय सेंटर्ड अबाउट FC आई मीन जो आपका रेस्पॉन्स था वो 1 था ना, यहाँ पे था FC प्लस ओमेगा एंड यहाँ पे था FC माइनस ओमेगा। ये बीच वाला पॉइंट था FC, समझिए। ये आप उसमें ऐड कर लीजिए, मैंने नहीं लिखा वो पॉइंट, दैट्स व्हाई यू हैव आल्सो मिस्ड।
So this is FC. Since we have centered the response of our band pass filter for FC only, and higher frequency being FC plus omega and lower being FC minus omega, therefore in यहाँ पे जो frequency components generate हुए, very important point, eyes on board. देखो यहाँ पे जो eyes on board, यहाँ पे जो frequency components generate हुए, like कि क्योंकि इसकी भी frequency होगी ना कुछ, इसकी भी होगी, इसकी भी और इसकी भी, right? Because यहाँ पे m of t और f of c multiply हो रहे हैं तो कुछ वहां से निकलेगा बैक. इनमें से जिनकी frequency fc माइनस ओमेगा से नीचे होगी वो ब्लॉक हो जाएंगे. जिनकी फ्रीक्वेंसी fc प्लस ओमेगा से ऊपर होगी वो भी ब्लॉक हो जाएंगे. क्या ये पॉइंट समझ आया? रेज योर हैंड जिसको नहीं समझ आया ये पॉइंट, रेज योर हैंड. सुने, मैंने ये कहा आपके बैंड पास फिल्टर का रिस्पांस इज सेंटर्ड अबाउट fc एंड फॉर द फ्रीक्वेंसी रेंज fc प्लस ओमेगा एंड फ्रीक्वेंसी रेंज fc माइनस ओमेगा इट विल हैव रिस्पांस एज 1, मतलब इट passes this range. So any frequency which is lower than fc minus omega or higher than fc plus omega will be दिमाग ब्लॉक हो गया है, will be blocked. So that means when I pass this signal through a band pass filter, those components such as if this is one component, this is another, this is another, this is another, and this is another. So those components among these which have frequency either lower than fc minus omega or higher than fc plus omega will be blocked. Get my point? So let's say if this is term number 1, this is 2, this is 3, this is 4 and this is 5. Among these only term number 4 and term number 5 will be allowed. So among these term number 2, why term number 2? हाँ जी CR आप बताइए. Why term number 2 will be allowed? पूरा आंसर बोलो. पूरा आंसर बोलो. मैं कह रहा हूँ term number 2 क्यों अलाउ होगी? सही मानना. Exactly, because इस बैंड में आती है, because it has a frequency component fc in it. So that is it. Next point. Why term number 5 will be allowed? हाँ जी भाई आप बताइए. आपके राइट में जो है ना, why term number 5 will be allowed? नहीं किस बैंड में? Because भाई देखो अगर आपको याद होगा am का जनरल एक्सप्रेशन वहां पे m of t मल्टीप्लाई करने से जो नेक्स्ट स्टेप पे हम कहते थे वो हम कहते थे इससे होगा fc प्लस f of m और fc माइनस f of m जनरेट होगा और वो यही बैंड है. आया समझ? Therefore term number 2 and term number 5 will be allowed. लिख लीजिए. Therefore in above expression, the output of band pass filter output, आप ऐसे लिखिए, band pass filter output will be given as A1 of AC cos of 2 pi fct plus ये वाली टर्म 2 times A2, तो A2 मल्टीप्लाई आएगा ना, AC तो AC m of t को भूलना नहीं, cos of 2 pi fct. सो ये होगा आपका किसका आउटपुट? बैंड पास फिल्टर का आउटपुट. सिगरेट का इसने सिगरेट भी दिया तुझी दिले तुझे ना बात ना पासा फिर क्या नीचे है. Okay, fine. We have derived this expression as the expression of AM, and if we just move ahead with this, हमने common लिया यहाँ पे A1, right? यहाँ पे लिखिए put AC dash equal to A1 AC and KA equal to 2 times A2 by A1.
Therefore, resulting expression is nothing but S of M of t, which is AC dash 1 plus KA M of t cos of 2 pi FCT. Wasn't this the general expression of your AM? Wasn't this the general expression of your AM? Yes, exactly. So we have reached the conclusion where we say that this band pass filter has generated the AM signal, the loci AM signal. Catch कहाँ पे था? Catch यहाँ पे था जब आपके square law device में multiple frequency, when your square law device, the crux of this topic lies on this thing that when we use a square law device in this diagram or in this system, the square law device generates many frequency components. Remember this, the square law device generates many frequency components, and out of those many we only need few which are centered about FC. So we use a band pass filter which has a frequency response of that nature, which is centered about FC and has the highest band as FC plus omega or FC plus FM and the lowest band as FC minus FM. Once we do that, what we get is this signal. हाँ, 3 कंपोनेंट्स आते हैं ना, लेकिन उससे पहले हमने उस 3 कंपोनेंट्स से पहले हमने ये एक्सप्रेशन लिखा है ना, तो 3 कंपोनेंट्स ऐसे आएंगे, m of t को जब आप एक्सपैंड करेंगे फिर ये यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 2 कंपोनेंट्स निकलते हैं और तीसरा ये वाला कंपोनेंट आएगा। आया समझ? जो उस 3 कंपोनेंट से पहले हमने ऊपर एक्सप्रेशन उसको देखना, डू सम होमवर्क आल्सो, इट विल हेल्प। ठीक है? Okay, fine. Although we wanted to cover switching modulator as well, but I think this thing is enough for you to settle down with what a square law modulator is. I would really recommend you to go for some reading. मैंने आपके पास एक बुक recommend की थी, आपने उसको देखा? एक संजय शर्मा की एक बुक आती है, वो communication, you can refer that. If not, आप कैनेडी को भी refer कर सकते हैं, your choice. So we'll stop here today.